of centuries really that has been building up as the Ram temple gets completed. And come January 22nd, there's going to be a row of people that is going to throng the small city of Ayodhya once again. The city itself is gearing up to be able to take the load of thousands and lakhs of people coming to take their darshan once the Ram Lala Murti is consecrated in the new Ram temple. It's been a struggle of 500 years to see the Ram temple being constructed at the very Ram Janmasthan where I am standing today. And it's been litigation of over 70 years to have this dream come true for over 80 crore Indians, but many more devotees across the world. The Ram temple is finally a reality. With that, it marks a seminal moment in Indian Indic civilization, because this is the first of those many struggles that has come to fruition when it comes to erasing the markers of invaders and reclaiming the rightful spot of Lord Ram for his temple. On January 22, 2024, the Prime Minister Narendra Modi will be coming here for the first big milestone as far as this Ram temple is concerned, which is the consecration ceremony. There is already a Ram Lala Virajman in a makeshift temple. Not just that Ram Lala, but a new Murti of Ram Lala will be consecrated at this Ram temple. From here on, those are the two Swarups of Ram Lala that will be prayed to by devotees. And from the very next day forward, the doors of the new Ram temple will be thrown open to thousands, possibly lakhs of devotees who are waiting very eagerly to do their first darshan. Today we have a very special guest, the chairman of the Ram Janmabhoomi Ram Temple Trust, Nripendra Misra, joining us, who was entrusted the very difficult task to ensure that not just that the Ram temple is built with good deadlines in mind on time, but also that it is built to specifications of those concerned, of those in the know, and those who have the knowledge of how the Ram temple should be built. We'll speak to Nripendra Misra, who will give us more information about not just the January 22 program, but also what to expect if you come next to the Ram temple. Barely a month or so to go, 2 months to go for the January 22 consecration program. The Prime Minister is expected to come here, and I'm guessing your work has increased quite a bit. Well, you are making me nervous because yes, it is true, it is just about 2 months or even less than that, because I suppose the arrangements would start after 15th, including puja for the consecration. Therefore, you can take it that we are just left with about 50 days. Now, let me give you first what is going to happen on 22nd, and then we'll go back that what is it that you are going to show to devotee. Right. On 22nd, the consecration takes place, which is right here. You walk straight, there is a sanctum sanctorum, we will have chance to go there. And there the program will start around 12 o'clock when the Prime Minister arrives. Of course, the guests will be here, right in front. Where we are yes, right now. They will be there at the ground level. On the stairs that just below this the level stairs. as well. And this is the main entry of the This temple. is the main entry, and you are standing on the eastern gate, which is the entrance of the temple. And then, of course, the Prime Minister enters and he goes there for the prayer and the final about 2 hours of religious functions. Here you will find it of interest that the platforms that you see, these are the welcome platforms. Okay.
and there will be 3 figures here. The first will be Singh, which is lion. So that Singha Dwar, so on one platform on both the sides. Right. So there are these 3 levels of these platforms. Yeah. So there will be the Singh, the lion on one. Then there will be elephant. Elephant. So it is Gaj Dwar. So Singh Dwar, then Gaj Dwar, and then Hanumanji. Okay. Okay. The other side also the Singh Dwar, the Gaj Dwar, and then Garunji. So they will be welcoming in a way, are blessing the devotees. Right. The devotees would come from this Parkota. Right. Parkota, for better understanding, is a place which is given to the devotee for parikrama. Right. So this construction will go round the temple. Like a corridor. And it is about 795 meters going to be. This is not a simple corridor. There is a thought process to it. There is outer wall, and the inner side it is open towards the temple. So anybody doing parikrama, of course, will be seeing the temple. Yes. The outer wall provides in a way the safety, the security for the temple, because no one then can enter. So in a way, its all entry is blocked from all the fronts except the eastern entry here. Now on the wall which is being created, each wall is in the form of a panel. The panel will have a bronze mural. That mural is roughly about 6 feet by 4 feet. And what is going to be the story there, I am covering it right in the beginning so that one can understand the significance of Parkota. It will display the ethical values of Ram and how that became relevant to those who pursued it, those who adopted it, those who became the part and parcel of the thought process of Maryada Purushottam. So, and it covers such events, they are events obviously, and it will cover up to 1857. Oh, yeah. Okay. So the murals will be all over and they are 100 in number. That work is being done separately. Now, I mean, you know, to the lay person, of course, it may just look a bronze mural, but what goes into it is, you have first the picture, then you give to the artist, then he has his own vision, his own view of how this picture should be now made in an art form. Once it is made in the art form, it gets approved by some topmost artists which we have engaged. Then it goes to the process of clay work, then fiber, then finally bronze. And then it comes here and gets installed. Absolutely. So that is that thing there. And the construction of this Parkota is actually more complex than the temple. Would that be fair to say? Well, it's costlier than the temple. Costlier than the temple. Yeah. May not be complex that much because the complexity we learned here. Later on, of course, that got repeated because whatever construction technology was adopted here has been adopted there. But just to get the idea, this eastern entrance gets connected immediately. There is a road which is called Ram Mandir Marg. So there is a road going and that opens to the main road. So we are talking about 800 meters of walk for the devotee, entering from this Parkota and then climbing up. So this in brief is how you will see on 23rd of January when the devotees in great number, I mean we are thinking about 1,25,000 every day, at least for 2 months.
because the initial enthusiasm will be much higher. will be, and perhaps more people coming from other states Then even Uttar yeah, Pradesh. So you are planning to open the doors of the Ram temple immediately the next day after the consecration? Oh, that's right. Yeah. For the reason, the darshan of Bhagwan cannot be stopped. So at the moment there is a temporary place where the God is located. So he really comes here. From there, the Chal Murti, Utsav Murti, which is there at the moment, that Murti will come on that day, on 22nd. And then the Achal, which is being carved, the new Murti, that will be installed here. So after 22nd, the devotees naturally must have darshan. So 23rd You don't want is the them day. to wait till the entire construction is No. At the moment they are going there, they will definitely see. Want to come. Yeah, like to come when it is being the प्राण प्रतिष्ठा और consecration has taken place. So प्राण प्रतिष्ठा जो यहाँ पे होने वाली है 22 जनवरी को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात नृपेंद्र मिश्रा जो बता रहे हैं वो ये है कि जो रामलला की अभी जो विराजमान मूर्ति है वो तो यहाँ आएगी ही, लेकिन उसके अलावा नई मूर्तियां भी बन रही है और मेरे ख्याल से 3 मूर्तियां बन रही है जिसमें से एक का सिलेक्शन होगा। जी। तो ऐसा क्यों किया गया है कि 2 चीजें, कि एक तो 3 मूर्तियां बनेगी फिर उसमें से एक का सिलेक्शन होगा, और दूसरा कि वहां से तो मूर्ति आई रही है जो विराजमान है, लेकिन नई रामलला भी विराजमान होंगे। अच्छा, आप ये सभी को आपके माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। 3 मूर्तियां तो इसलिए थी क्योंकि जो आर्ट वर्क बना कि भगवान कैसे दिखेंगे, जो उनको विवरण दिया गया कि किस प्रकार किस उम्र की उनकी मूर्ति होनी चाहिए, किस प्रकार की किस ऊंचाई की लंबाई की होनी चाहिए, समचरण होना चाहिए मतलब एक ही लेवल पे हो, फिर अजान बाहु होना चाहिए मतलब उनके हाथ जो हैं वो लंबे हैं टिल गोइंग टू द नी. सो ऑल दोज डिस्क्रिप्शंस व्हिच आर देयर इन द रामायण of Maharishi Valmiki and later Tulsidas ji, all that was picked up to describe. But then we could not have depended on one sculptor. Right. You wanted options. Yeah. So the selection will be made finally. Sometime the trust will decide that which of the 3, which is being carved here only, somewhere in Ayodhya. In Ayodhya. Yeah. Will then be selected for the Pran Pratishtha and that Murti will come here. And what happens to the other 2? Honestly, trust has not yet decided. Okay. Maybe they can be consecrated in some other temples in Ayodhya. Well, it's a very, very, I would say, from the point of view of emotions, it's a very delicate question. Right. And people would like to know how, in what manner it will be utilized. There are options, but the trust has to finalize on those options and they will do it. So, मिश्रा जी, इससे पहले कि हम अंदर जाएं और मंदिर कितना भव्य है वो थोड़ा बहुत हम अपने दर्शकों को बताएं, हमें ये बताइए कि ये जो पूरा निर्माण हुआ है इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैसेट ये है कि इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है जी। ये सारा पैसा दान से आया है और भक्तों ने दिया है। तो कितना अभी तक आया है ट्रस्ट के पास और कितना यूज हुआ है? सब दान है। किसी भी सरकार का, राज्य या केंद्र का कोई धनराशि इसमें इस्तेमाल या उपयोग नहीं हुई है। अभी 3,250 करोड़ रुपए लगभग डोनेशन के रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन अब जो एक नई व्यवस्था, नया एक तरीके से रास्ता खुला है वो FCRA अकाउंट फॉरेन है। डोनेशंस के लिए। तो FCRA अकाउंट विदेशी लोग जो हमारे NRIs हैं उनका, तो मैं समझता हूँ उनके भी माध्यम से बहुत धनराशि आएगी। उन्हें बड़ा संतोष था कि उनको ये अवसर क्यों नहीं मिल रहा है कि वो भगवान के इस कार्य में भागीदार बने। तो अब वो भी ओपन कर दिया गया है। सो द कलेक्शन विल बी मेड। अब आप सोचिए ना, इसमें जो निर्माण है वो सिर्फ मंदिर और परकोटा नहीं है। यहाँ से 500 मीटर चलेंगे अंदर ही तो एक कुबेर टीला मिलेगा। कुबेर टीला बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ पर शिव का मंदिर है। बाकी
जब कुबेर टीला देखा गया तो हर प्रकार के पौधे थे, पेड़ थे, एक तरीके से जंगल ना भी कहूँ तब भी एक घना एक तरीके से बोटैनिकल वो ग्रोथ थी वहाँ पर। शिव मंदिर के पास ही वहाँ जटायु इंस्टॉल किए जा रहे हैं और जटायु श्री जो हैं वहाँ से मंदिर की तरफ देखेंगे। अच्छा। हाँ, सो और वो ब्रॉन्ज के बनाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर निर्माण जो बाहर है उसमें 7 मंदिर बन रहे हैं जी, जो एक तरीके से सोशल हार्मनी का प्रतीक है जी। जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने वनवास में संदेश दिया था कि हर वर्ग समाज का, हर व्यक्ति वह उनके लिए उनका है। तो उस संदेश को और इस भारतीय संस्कृति को एक तरीके से एडॉप्ट करने के लिए उन मंदिरों की यहाँ पर व्यवस्था होगी। तो क्या क्या मंदिर बनेंगे? जिसमें महर्षि वाल्मीकि हैं, वशिष्ठ जी हैं, निषाद जी हैं, सबरी माँ हैं, अहिल्या जी हैं। तो इस प्रकार से 7 मंदिर का व्यवस्था की जा रही है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। आपने बताया ये जो परकोटा बन रहा है इसमें 1857 तक की म्यूरल बनेगी, तो 1857 का क्या दृश्य आप दिखाने वाले हैं उसमें? देखिए, इसमें दृश्य तो सारे भगवान से संबंधित हैं। हाँ जी। इवेंट्स भी उन्हीं से संबंधित जी, हैं। तो 1857 का हाँ, क्या लेकिन event है? इसलिए वो बड़ा अच्छा विचार किया गया। तो प्रश्न यह था कि यदि हम किसी एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु, हाँ, जो सेजेस कहलाते हैं, उनकी वहाँ पर हम म्यूरल बनाएं और उसकी कहानी कैप्शन में लिखें जी। तो और फिर ये बताएं कि इनको हमने क्यों चुना जी। क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम से कहीं ना कहीं संबंध होना चाहिए जी। घटनाओं का संबंध होना चाहिए। तो यह प्रश्न था कि लोग फिर पूछेंगे कि आपने अमुक धार्मिक व्यक्ति को क्यों नहीं रखा। तो हमें एक डिस्क्लोजर करना पड़ा कि हमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो 1857 तक ही किया है, उसके बाद का नहीं किया है। इसलिए यदि कोई बाद के लोग हैं, महापुरुष हैं या साधु समाज हैं या प्रतिनिधि हैं या जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया, क्योंकि 500 वर्ष का यह भी कहलाता है आंदोलन, तो उससे पहले का करना था जी। तो हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज के साथ इस ब्रॉन्ज म्यूरल को करना चाहते थे। We didn't want anything controversial in the form of mural. Right. So we stopped at 1857. Okay. Yeah. So all of this complex, you're saying 3,200 crore rupees have been received. And 3,250 crores. Yeah. And you will get much more now that foreign donations are allowed. But what would be the total cost? Because this is not just the temple, mind you, for the benefit of our viewers. There is of course a parikrama parkota going all around, and it's even costlier than the temple so far, right? बिल्कुल। इसका कितना अभी कॉस्ट आया? अगर अंदाजन इसका 700 करोड़ है, हाँ। तो परकोटा जो 795 फीट में होगा, हाँ। वह लगभग 900 करोड़ का है। बट ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली बहुत बड़ा होने वाला है। ये 71 एकड़ में एक कॉम्प्लेक्स है। तो अगर लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम में जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कॉरिडोर देखा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये उससे बहुत गुना बड़ा होगा। तो इसकी कॉस्ट में फिर बहुत जी, ये इसमें एक तो देखिए भूमि की सीमा नहीं थी। काशी विश्वनाथ में भूमि की सीमा थी, दिक्कत थी। हाँ। और कुल मिलाकर के अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है, सब निर्माण कार्य लगभग 2000 करोड़ में जी पूरा होने की संभावना है। लेकिन ये बहुत कुछ निर्भर करेगा क्या क्या जुड़ता है। ऑडिटोरियम की बात हो रही है जी, म्यूजियम की बात हो रही है जी, जी। ट्रस्ट ऑफिस होगा, गेस्ट हाउस होगा, और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो आपने देखा नहीं देखा तो आप कृपा करके वहाँ 1 मिनट रुक करके देख लें। वो है पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर जी, जहाँ पर कि लोगों को होल्डिंग करीब 5000 लोगों की स्पेस होगी, जहाँ पे लोग अपना सामान जमा कर सकेंगे और उसके बाद दर्शन के लिए आएंगे, और कुछ वहाँ पर अन्य सुविधाएं भी होंगी श्रद्धालुओं के लिए।
तो वह भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी। और वो 22 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। Oh, okay. So it's going to be ready. So a lot of preparation is being done, not just of the temple and what goes into making of a temple, but also the experience of the Shraddhalu and the experience of the devotees, quite like on the lines of Kashi Vishwanath that we have seen, that a lot of detail has been taken care of. So let's go inside the temple Sure. now, and Mishra sir will explain to us the intricacies of what the devotees are likely to see. First, of course, the Prime Minister and some of the seers are going to be coming on January 22nd. What is it that is going to be described, you know, to them? देखिए, यहाँ पे जब अब हम लोग एंटर कर रहे हैं तो रफली टेम्पल का लंबाई जो है वो 390 फीट है जी। इसकी जो चौड़ाई है आयाम वो लगभग 300 फीट है। इसमें जब हम सीधे वॉक करते हैं तो सैंक्टम सैंक्टोरम के अलावा यहाँ पर 3 मंडप हैं, जो एक गुरु मंडप है, एक यहाँ पर रंग मंडप है जी, और एक यहाँ पर स्लिप हो रहा है, एक थर्ड मंडप है, और 2 साइड के मंडप मिलाकर के 5 हो जाते हैं जी। एक तरफ प्रार्थना मंडप होगा, एक तरफ नृत्य मंडप होगा। अच्छा। तो इस प्रकार से 5 मंडपों के उसमें आप वॉक करते हुए चलेंगे। ये पहला मंडप है। ये जो हम अब पहुंच रहे हैं, ये राम जन्मभूमि मंदिर का पहला मंडप है। ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है जी। यहाँ पे जो पिलर्स की जो नक्काशी वगैरह है वो सब हो चुकी है, और ये भी जो इसकी गुम्बद भी है वो भी तैयार हो चुकी है। तो इसका भी कुछ ये रंग मंडप है। ये रंग मंडप है, सबसे पहला मंडप। जी हाँ। तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है? जी, इसका एक तरीके से उल्लास जी। यू आर नाउ रीचिंग द स्टेज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड utmost happiness. Right. So you have now entered, and your only let's say ambition or inspiration or whatever your devotional commitment is to have darshan. So you are, this is joy. Yeah. On coming into the temple and doing that. And all these names have come from the special हमारे आर्किटेक्ट थे, उन्होंने मंदिरों के निर्माण की एक शैली थी, नागर शैली, उसके भी हैं, उन्होंने उसे एडॉप्ट करके इसका नाम दिया जी। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज आप देखेंगी, see you see the pillars, Yes. and These are some of the sculptures that are there. बहुत सारी मूर्तियाँ इसमें पिलर्स में बनाई गई हैं। ये इसका एक हिस्सा है जी। अपर मोस्ट जी। ये आप इस तरीके से समझें कि ये इनको हम नृत्यांगना नहीं कहते हैं जी। दे आर नॉट जस्ट डांसर्स बट दे आर पावर, शक्ति। तो उसका है, ये वो हैं जो भगवान के अराइवल पर खुशियाँ मना रही हैं। जी जी। तो इसीलिए ये रंग मंडप है। हाँ, ये ऐसा ही, लेकिन ये जो पैटर्न है ये पूरे पिलर्स पे अडॉप्टेड है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी मिश्रा जी, क्योंकि इसका क्या कोई इस राम टेम्पल के लिए कोई टेम्पलेट तो नहीं रहा हुआ होगा, या कुछ ऐसा था हिस्टोरिकली जिससे अडॉप्ट की गई हैं कुछ चीज़ें कि ऐसा होना चाहिए जब राम टेम्पल बनेगा? तो मंदिरों की शैली तो वो आर्किटेक्ट महोदय ने अडॉप्ट किया पुस्तकों से जी, और उनका ही यह एक तरीके से योगदान है कि इतने मंडप होंगे, फिर फर्स्ट स्टोरी पे एक घटेगा, फिर 3 मंडप हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर 2 मंडप हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर शिखर होगा। तो एक तरीके से ये सब उनकी शैली का हिस्सा है जी, जो उन्होंने अडॉप्ट किया। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जो वीजे हैं वो ज़रा दिखाएं कि इसकी जो पूरी गुम्बद है वो तैयार हो गई है और उस पर सारी नक्काशी हो चुकी है। ये फर्स्ट मंडप है राम टेम्पल का और यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ कुछ मूर्तियाँ अभी भी बन रही हैं
जिसकी शिल्पकारी अभी होगी। जैसे कि मेरे साथ में यहाँ पैटर्न बना हुआ है, कुछ अभी थोड़ा सा हो गया है, इसको पूरा नकाशा नहीं गया है और थोड़ी सी बची है। तो ये सारा काम अभी ऑब्वियसली ख़त्म किया जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत काम बचा है यहाँ फर्स्ट मंडप में भी। और जाते जाते हमारे पास 3 आगे मंडप हैं और 2 साइड में मंडप हैं। ये जो आपने बहुत अच्छा किया, समझा दिया। जो कार्विंग है ये अभी इनको नकाशा जाएगा या आप चिजलिंग कहें, हाँ। वो करेंगे और उसके बाद फिर इसकी फाइनल टच होता है जिसमें कि ये स्वरूप फाइनल हो करके आएगा। ये 3 हैं, आपने बिल्कुल सही बताया कि पूरा नहीं है। थर्ड ये है जो अभी बनना है। ये फिक्स है, कौन सी मूर्ति आएगी ये सब तैयार है। मूर्ति की कार्विंग इसी पे होगी, इस पे ड्राइंग बनेगी और इस पे फिर पत्थर से काम होगा जी। लेकिन क्या होगा यहाँ मूर्ति वो ऑलरेडी तैयार है। तो सर ये जो मंदिर कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है ये डिफरेंट होता है, इसमें लोहा सीमेंट यूज़ नहीं होता, सिर्फ पत्थर से ये बनता है। तो ये पत्थर कहाँ से आया है, इसकी कुछ खास खासियत है जिस पत्थर से ये बनाया गया? जी, एक तो ये है कि जो पत्थर है ये तो ऊपर स्टोन का है, जो फाउंडेशन राफ्ट और प्लिंथ के बाद है। फाउंडेशन इसकी जो है वो 15 मीटर डीप है। फाउंडेशन डीप है और जिस प्रकार से बनाई गई वो आईआईटी चेन्नई ने रिकमेंड किया जी। और उसकी गुणवत्ता ये है, द स्पेसिफिकेशन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू ए स्टोन। So that is the feature, and why it was necessary, not many may know that Saryu river was very close. So when the geologists surveyed it, they saw that maybe 1,000 years or before there was some flow which was coming on this ground. Okay. So they took care that the soil of that has to be made stronger. So the soil was dug out and removed and then refilled with the engineered soil recommended by IIT Chennai. So overall, how many workers do you think have worked over the construction of this temple so far? Well, at the moment there are about 2,500 people who are working. Okay. And I believe it's day and night construction. Oh yes, yes. It's all 3 shifts. Oh yes. And that also, to be honest, we keep reviewing it. It is not adequate. Not adequate. Yeah, if we have to finish. By the way, you may like to know that this stair takes you to the first floor. Yeah. And this mandap is not closing on the first floor. Will this have a height going up to the 3rd floor? This will go up to the 2nd floor. Okay. Yeah, so first floor and 2nd floor. But this gumbad will come. What perhaps is not closing, and you rightly observed, here it will get closed in a manner, but what will not close and the height it will take this up to 2nd floor is on the Guru Mandap. So that is going to be fully up. Yeah. There's going to be no roof. Yeah, and because of that, the roof will be on the 2nd floor. 2nd floor. Top floor. That's where the dome will be there. So that will be a full high ceiling area of the temple. And from there, the next is the support, the shikhar comes. Now you are actually last but one. After this you will go to the sanctum sanctorum. Right. So what is this? This is also the 3rd mandap. Yeah, this is Guru Mandap. This is you Guru have Mandap. really entered Guru Mandap. Okay. And this looks really majestic. Yeah, and this will go up to another 2 stories, first and 2nd floor. To ensure that the safety of the devotees, You've covered it. Covered it.
so that the work will go on while the DOTs will make a queue and go to the. So this is going to be open, right? That's what I wanted to clarify. So from those from the first floor can look down. Yeah, first floor will be open. Second floor finally will be the roof closed. So this is some marble floor work that is here. So clearly a lot of attention is being paid to the inlay work and the marble work that is on the floor of the temple as well. This is the exactly, you will have the feel how the entire flooring will come, in which there will be this kind of a art design in the center. There will be border on the sides and the marble work. Here the two domes which will also be there. On the left and the right. Yeah, the Pratna and the Nritya Mandap. So Nritya Mandap, does it literally mean Nritya Mandap? Will there be ceremonies here? Not Nritya, but it will enable devotees to perform, but not in the sense of Nritya. Not in the sense of entertainment. Right. Yeah. But maybe a ceremony of sorts. If there are ceremonies which trust would approve, only that will be coming here. So, for the benefit of our viewers, 22 जनवरी 2024 तक ये ग्राउंड फ्लोर है. आप जितना कंप्लीट कर सके उतना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बाकी फ्लोर्स फिर बनते रहेंगे. 2 फ्लोर्स उसके ऊपर भी हैं. मेरे ख्याल से ऊपर राम दरबार भी बन रहा है फर्स्ट फ्लोर पे और फिर सेकंड फ्लोर भी है, लेकिन उनका काम चलता रहेगा और जो शरणार्थी आएंगे, जो डेवोटीज आएंगे, उनको एंट्री मिलती रहेगी. बिल्कुल आपने अच्छा किया, ये सफाई दे दी. लोगों को कुछ कंफ्यूजन सा होता है कि जो निर्माण है वो पूरा हो गया. जी. तो ये नहीं है, भूतल का निर्माण पूरा हो जाएगा जी. फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का निर्माण और जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो भी बनता रहेगा. तो वो 2 फेज में है. पूरा मंदिर दिसंबर 2024 में हो जाएगा. अच्छा, तो वो भी बहुत पास लग रही है डेडलाइन सर. आपको लगता है आप कंप्लीट कर पाएंगे? क्योंकि मैं जो देख रही हूँ जितना विशाल ये स्ट्रक्चर है, तो और जितना आप कॉम्प्लेक्स की बता रहे हैं, 70 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, आगे परकोटा है, पूरा परिक्रमा होगी, तो बहुत काम अभी बाकी. बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है वो दिसंबर 2025 में पूरा होगा. वो बनता रहेगा. हाँ, तो वो 3 चरण में इस कार्य को लिया गया था. अच्छा, जिसका कि आपने देखा. श्रद्धालु यहाँ तक आएगा जी. यहाँ से उसके भगवान के दर्शन होंगे. तो अब हम 3 मंडप पार करके यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये गर्भगृह है. दिस इज द सैंक्टम सैंक्टोरियम एंड आई कैन ऑलरेडी सी दैट इट्स लुकिंग रियली ग्रैंड एंड फैसिनेटिंग बिकॉज दिस इज स्टोन टिल हियर, बट बियॉन्ड that is marble on the walls, right? Yes. So that is all white marble, संगमरमर का ये मार्बल है जो इंडिया का बहुत फेमस है. और मैं देख रही हूँ कि एक पेडेस्टल भी तैयार हो चुका है जी. तो उस पेडेस्टल पे उस हाइट के बाद अब रामलला की मूर्ति लगेगी. बिल्कुल आपने सही गेस किया. ये वही स्थान है जो कि प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पे 5 अगस्त 2020 को एक शुभारंभ का पूजन किया था. जी. उसके बाद निर्माण कार्य हुआ. तो मैं ये देख रही हूँ मिश्रा जी की ये कुछ ऑक्टागोनल टाइप शेप लग रही है. इसका कोई सिग्निफिकेंस होता है? ये जो गर्भगृह का जो डिजाइन है, इस पे क्या विचार हुआ था? विचार तो काफी हुआ कि स्क्वायर हो, ऑक्टागोनल हो. अंत में श्रद्धालु को ध्यान में रखा गया जी. एक और एक तरीके से 2 चैलेंजेस और थे. एक चैलेंज तो यह था कि वास्तु और नागर शैली में यह कहा जाता था कि ये जो पार्ट है जो खुलेगा भगवान के दर्शन के लिए, यहाँ पर सोने के 2 द्वार लगेंगे. तो इसकी इतनी भी चौड़ाई वो बहुत समझते थे. अच्छा. हाँ, आप अगर ध्यान करें तो अधिकांश मंदिरों में जो छोटा होता है जी. तो उनको इस पर आपत्ति थी कि ये आप बहुत लंबा कर रहे हैं. संभवतः 12 फीट है.
और उसके बाद एक दूसरा चैलेंज था कि इसको हम इस प्रकार से सपोर्ट दें कि स्टोन के वेट को ये सस्टेन कर सके। जी जी बिल्कुल। जो कि CBRI को देखना था, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को। तो उन्होंने देखने के बाद यह अपनी स्वीकृति दी कि आप इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी सस्टेनेबिलिटी की। तो यहाँ पर ये कठिनाई थी। तो सर ये जो पूरा जो एक तरह से म्यूरल ही है, ये जो मार्बल में पूरा वो किया गया है, स्कल्प्ट किया गया है, तो इसके पीछे भी कोई स्टोरी होगी? क्या क्या डिपिक्ट करना था गर्भगृह की दीवारों पे? देखिए, इसमें अभी बहुत सारा काम है जी। इसके ऊपर आप अभी देख नहीं सकेंगी, वो विष्णु जी का है और वो एक तरीके से समुद्र मंथन जी उसकी कहानी है जी, जी। जिसमें हर एक फिर 9 ग्रहों को दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पर 2 द्वारपाल होंगे जिनका नाम जय और विजय होता है। अच्छा। वो यहाँ पर लगेंगे। अच्छा। और फिर साइड में हनुमान जी और गणेश जी की मूर्ति होगी। मैं देख रही हूँ ऊपर गणेश जी की मूर्ति ऑलरेडी लगाई गई है, जो बिल्कुल चौखट है गर्भगृह की, उसमें गणेश जी की मूर्ति लगाई है, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति होना बहुत जरूरी है। लेकिन साइड में लगभग 4 फीट के हनुमान जी लगेंगे और उसी प्रकार के गणेश जी लगेंगे। 1 सेकंड आपका और लूँगा। हाँ जी। ये जो स्थान है भगवान का, जिसको हम सभी विश्वास करते हैं कि यहाँ पर भगवान राम जन्मे, प्रकट हुए। अच्छा। तो इस स्थान को 2 मूर्तियों के साथ रखा जाएगा, इसीलिए ये आप देखेंगे लेवल्स हैं। जी जी जी। नीचे वाले लेवल पे वहाँ जो वर्तमान में मंदिर रामलला की जो मूर्ति है वो यहाँ पर आएगा जी, और उसके ऊपर जो नई मूर्ति है वो है, और वह मूर्ति 51 इंच की बनेगी जी। तो इस प्रकार से कैलकुलेटेड हाइट में लगभग 71 इंच की हाइट पे हो, जिससे कि वह इधर से दिखाई भी दे सके। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राम नवमी के दिन भगवान के माथे पर सूर्य किरण पड़नी चाहिए ऊपर से। हाँ, तो वो सूर्य किरण कैसे आए, यह कार्य CBRI और एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट पुणे ने किया। तो वो सूर्य किरण ऊपर से आएगी या सामने से? नहीं, ऊपर से आएगी। ऊपर शिखर से एपर्चर होगा, आएगी और आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी और उनके माथे पे रिफ्लेक्ट की जाएगी और फिर वो आएगी। चलिए, रामनवमी पे फिर ये भी अब देखेंगे लोग, हर रामनवमी में ये भी देखा करेंगे। एक तरीके से वो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण होगा जी जी, और हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत संख्या में लोग चाहेंगे कि उसी समय रहें। हाँ, रामनवमी के दिन वो देखने आएंगे कि जिस समय हटे नहीं। तो किस समय होगी ये सूर्य किरण? वो रामनवमी के दिन 12 बजे दिन, 12 बजे दोपहर में उनके माथे पे सूर्य किरण पड़ेगी। तो ये वो इतना एरिया है जहाँ तक दर्शन के लिए लोग आ पाएंगे। मिश्रा जी, देयर इज अ लॉट ऑफ faith that is associated with the Ram temple, isn't it? Oh yes. And you must have encountered that level of devotion and faith from the public during the construction of the Ram temple. Any experiences that come to mind of how people showed their faith and devotion? That experience is not really related to this temple, but if you really want to know about this, I get at least on an average 20 requests. I want to be associated, pro bono, no expectations, nothing. Just put me in some task. They want to work for the temple as a voluntary worker. Provide even after when the temple is open, they want to be here. And you'll be happy to know that in trust today, there are number of people
engineers, retired eminent engineers, who have given their commitment pro bono with no expectation. They just live in one room with their family or without family and just do the work. The food is taken care of by the trust. But the But they rest don't is- take any yeah, salary or nothing, any nothing. work, Yeah. income from Yeah. their work. Now, you've been a bureaucrat. You've obviously served with the PMO for a very long time. But there's been a lot of politics associated with the Ram Temple in India. I mean, not as a politician, not as a bureaucrat, but do you sometimes wonder how is this even possible? Because many people did not think it was possible in their lifetime. I didn't. You did not. Many of my generation, even future and past. Nobody had thought that this temple will come and will become a reality. I think there you have to recognize our judiciary. Our judiciary is trusted by all people of India, all citizens of India. They never question the judicial pronouncement. And the most important function of our judiciary is that if something is overheated, where the nation temperature has gone very high, the judiciary has a capacity to absorb it, cool it down, then decide on facts, determine the truth and deliver the judgment. This is what happened in November of 2019. Absolutely. So all the politics died that day. And thankfully, we have not seen any acrimony Nothing. since that day. If you visit Faizabad and Ayodhya, Faizabad actually is not Faizabad, Yeah. now Ayodhya. If you visit, you will notice that the both communities or any number of other communities, they are living peacefully and they have often wondered why was all this? And if you talk to them frankly, they will say it was all creation of outsiders. Personally, for you, has this been a very gratifying experience, fulfilling experience, or are you tired now? No, I am not tired, and my commitment is unquestioned. My commitment is not qualified. My commitment is not for any return to make this temple. So I consider it as a divine assignment which came my way. I will do my best. So there is a degree of faith Right. within me which drives me to do the work. Because you mustn't have expected at one point that so late in your career you would get a job like this. You would be tasked with such an important job. In 2019 when I left PMO, I had mentally sort of decided I will pursue some of the other things, some other work which was dear to me. But then came the judgment and in January, February of 2020, some personal inquiry was made about my accepting the assignment. So that is what it is. So what was your first thought when you were approached? Absolutely, first and last, even now, I consider this as an instrument of this task or great work for God which has come my way. When I talk to many other people, they all tell me I'm very fortunate to have got it and blah blah. But you're part of history. Yeah, but then I start realizing, but believe me, in doing this work, I have felt very humble.
because it is coming true with millions and billions of people who are every day praying for the completion of the temple. True. So it is coming now, and it will become reality, I hope. All this because of Almighty. The construction of the Ram temple in itself is a huge moment for Indian civilization. But the construction of the Ram temple is not just that. It is also a complete transformation for the city of Ayodhya. From an airport to the expansion of the railway junction, to broadening of roads and highways, to a lot of the other spots which devotees come to in Ayodhya being beautified. There's a lot of work, as many as 200 big and small projects that are ongoing in Ayodhya in preparation for the devotees, lakhs of whom that will come once the Ram temple throws its doors open. To begin with, that is going to happen on the 23rd of January 2024. But of course, as the entire temple and the temple complex gets readied, it will be able to take a lot more devotees, and that number will always be ever expanding, not just from UP, not just from India, but from across the world. So this is a big challenge for the city of Ayodhya too, and the current government of Uttar Pradesh too, as much as it's the challenge to ready the Ram temple on time and to throw open its doors. The challenge for the city will be to be able to handle that kind of a load that will be coming into Ayodhya. With camera person Rajesh Bhardwaj in Ayodhya, Shivani Gupta, CNN News 18.